After a CIA and MI6 orchestrated campaign of mass killing and purges in Indonesia in the 1960s that left an estimated upward of 1 million Indonesians dead, the attention of the U.S. turned to fighting communism in South America. In Chile, a bloody coup was engineered that ousted the popular and democratically elected, left-leaning government of President Salvador Allende on September 11, 1973, by Gen. Augusto Pinochet. What followed was a dark chapter in Chile's history, filled with brutal repression, enforced disappearances, illegal detentions and torture, and mass killings by the military regime and its secret police. This period was characterized by the unleashing of state terrorism, the suppression of fundamental rights, and the complete evaporation of the rule of law and accountability of the army and security services. Over 40,000 Chileans are officially recognized as having been subjected to human rights abuses by the military and intelligence agencies over this period, including an estimated 3,200 subjected to extrajudicial killing. Argentina's dark period with regard to human rights abuses and political repression began with the military coup of 1976, the umpteenth time in the country's history, that deposed President Isabel Perón and brought a junta into power. Led by Army Chief Gen. Jorge Rafael Videla, the junta began an unprecedentedly violent campaign against political opponents and leftists, that it itself branded as the Dirty War. Thousands of Argentinians were summarily picked up by security agencies, brutally tortured, killed and thrown into unmarked mass graves, disappeared forever, or murdered by right-wing death squads. Human rights abuses and debt-induced economic instability could be the new norm. As the U.S.'s covert war against the spread of socialism and communism in the Western Hemisphere, dubbed Operation Condor, metastasized through South America, the same pattern of human rights abuses and killings on industrial scale by military regimes or proxies propped up by the U.S. and actively supported by American military advisors and CIA operatives was replicated in Guatemala, Nicaragua, Ecuador, and Honduras. All told, an estimated several 100,000 people across Central and South America died during this period in the dirty wars conducted by imposed military juntas. Another feature of this period in Latin America's history was that the military coups almost invariably provided beachheads for U.S. corporations and the Chicago Boys, technocrats inspired by, and working under, Milton Friedman and promoting the idea of an unfettered free market. Along with U.S. involvement, poor economic management and protracted reliance on foreign loans, leading to unsustainable debt burdens, was another feature of Latin America that may resonate with Pakistanis. Fast forward in time. In 2013, in yet another military coup against a popular and elected government taking place with the full backing of the U.S., President Mohamed Morsi of the Muslim Brotherhood Party, Egypt's first democratically elected president, was ousted by the army chief, Gen. Abdul Fattah al-Sisi. Thousands of Muslim Brotherhood supporters and other pro-democracy activists were gunned down or imprisoned without trial. The human rights abuses unleashed by the Sisi military dictatorship have been described as the worst since the Mubarak years. One of the most egregious abuses occurred in August 2013, when the army and security forces attacked a peaceful protest by Morsi supporters, killing an estimated 1,000 unarmed demonstrators. Human Rights Watch described it as one of the largest killings of demonstrators in a single day in recent history. Hundreds of alleged supporters of the Muslim Brotherhood were also sentenced to death in a single mass trial. In 2019, Mr. Morsi died in detention in what UN experts ruled could amount to a state-sanctioned arbitrary killing. There has been a deafening silence from the self-anointed global champions of human rights since the illegal coup and subsequent abuses of Gen. Sisi's dictatorship. Since the regime change in April 2022, the Pakistani establishment seems to be dangerously tilting towards adopting the politicide undertaken by Sisi's Egypt, and previously by a host of anti-democratic regimes in Latin America and other places. While human rights abuses have a long history in Pakistan, they have generally taken place in the context of armed conflict against the state. Journalists have been killed, beaten and intimidated in the past, including some high-profile ones,
but the assassination in Kenya of the country's most prominent investigative journalist Arshad Sharif is a new and sorry low. Others have received death threats and been forced into exile. Adoption of inhuman torture tactics, including alleged sexual abuse against political opponents, is also an ominous new chapter. As an aside, while the U.S. involvement in Latin American military coups and subsequent human rights abuses had a clear strategic rationale, as well as commercial objectives, such as for the Iraq War, the motives for regime change in Egypt or Pakistan may be immediately less obvious. In Egypt's case, keeping a client state within its sphere of influence is an obvious candidate, while keeping Islamist influences at bay, no matter how democratic and peaceful. France's reaction to the Islamic Salvation Front, FIS, win in Algeria in 1992 and its involvement in sparking another dirty war in its former colony is another case in point. In Pakistan's case, U.S. motivation in promoting regime change appear twofold. Reinstating the discredited and crooked old guard ensures continuation of a pliant political system in which the military and corrupt domestic ruling elite operate hand in hand in furthering U.S. interests. The other is to contain China's influence after the launch of CPEC and cut off its potential access to Gwadar. Limiting China's access to Afghanistan's mineral riches also appears to be a strategic goal. Regime change. Abductions. Wrongful confinement. Torture. Assassination. Attempted assassination. Enforced disappearance. False cases. Exile. Silencing of critics. Repositioning as a U.S. client state. We appear to be ticking all the boxes. While human rights abuses in Pakistan are not new, they have taken a dangerous turn in their scale as well as brazenness in the post-regime change scenario. Whether Pakistan is going to walk like an Egyptian or slide like Latin America, either way it is a dangerous and ominous development that can only be the precursor to several very difficult years ahead. The writer was a member of the Economic Advisory Council under the former Prime Minister. Published in Dawn, January 29, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@DawnVocabulary. सन 1960 की दहाई में इंडोनेशिया में CIA और MI6 की जानिब से बड़े पैमाने पर कत्ल-आम और सफाई की मुहिम के बाद, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 10 लाख से ज़ायद इंडोनेशी हलाक हुए, अमेरिका की तवज्जो जनूबी अमेरिका में कम्युनिज्म से लड़ने की तरफ मबजूल हो गई। चिली में 11 सितंबर 1973 को जनरल ऑगस्टो पिनोशेट ने सदर सल्वाडोर इलेंडे की मकबूल और जमहूरी तौर पर मुंतखब बाएं बाजू की हुकूमत को माजूल कर दिया। इसके बाद चिली की तारीख का एक सियाबाब था, जो फौजी हुकूमत और उसकी खुफिया पुलिस की तरफ से वहशियाना जबरी गुमशुदगियों, गैर कानूनी हिरासतों और तशद्दुद और बड़े पैमाने पर हलाकतों से भरा हुआ था। इस दौर में रियासती दहशतगर्दी, बुनियादी हुकूक को दबाने और कानून की हुक्मरानी और फौज और सिक्योरिटी सर्विसेज के एहतसाब का मुकम्मल खात्मा हुआ। चिली के 40,000 से ज्यादा शहरियों को सरकारी तौर पर तस्लीम किया गया है कि वो इस अरसे के दौरान फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का निशाना बने हैं, जिनमें एक अंदाजे के मुताबिक 200 मावराए अदालत कत्ल का निशाना बने हैं। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी जबर के हवाले से अर्जेंटाइन का सिया दौर 1976 की फौजी बगावत से शुरू हुआ, जो मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ, जिसने सदर इजाबेल पीरोन को माजूल किया और एक जनता को इक़्तिदार में लाया। फौज के सरबराह जनरल जॉर्ज राफेल वुडियल्ला की क़ियादत में जनता ने सियासी मुखालिफिन और बाएं बाजू के हामियों के खिलाफ एक बेमिसाल पर तशद्दुद मुहिम शुरू की, जिसे इसने खुद गंदी जंग करार दिया। अर्जेंटाइन के हजारों शहरियों को सिक्योरिटी एजेंसियों ने उठा लिया, बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया, कत्ल किया और बेनिशान इज्तिमाई कब्रों में फेंक दिया, हमेशा के लिए गायब कर दिया। दाएं बाजू के डेथ स्क्वाडों के हाथों कत्ल कर दिया गया।
इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां और कर्जों की वजह से माशी अदम इस्तेहकाम नया मामूल बन सकता है। जैसा कि मगरबी निस्फ कुरा में सोशलिज्म और कम्युनिज्म के फैलाव के खिलाफ अमेरिका की खुफिया एजेंट, जिसे ऑपरेशन कॉन्डोर का नाम दिया गया था, जनूबी अमेरिका में फैल गई, इसी तरह अमेरिका की सरपरस्ती में कायम फौजी हुकूमतों और पराकिसियों की तरफ से सनती पैमाने पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और हलाकतों का यही नमूना ग्वाटेमाला में दोहराया गया। निकारागुआ, इक्वाडोर और हवंडुरास सब ने बताया कि इस अरसे के दौरान वस्ती और जनूबी अमेरिका में एक अंदाजे के मुताबिक कई लाख अफराद मुसल्लत करदा फौजी जनता की तरफ से की जाने वाली गंदी जंगों में मारे गए। लातीनी अमेरिका की तारीख में इस दौर की एक और खुसूसियत ये थी कि फौजी बगावतों ने तकरीबन हमेशा अमेरिकी कारपोरेशनों और शिकागो बॉयज के लिए साहिल फराहम किए टेक्नोक्रेट्स जो मिल्टन फ्रीडमैन से मुतासिर और उनके मातहत काम कर रहे थे और एक आज़ाद मार्केट के तसव्वुर को फ़रोग़ दे रहे थे। अमेरिकी शमूलियत के साथ साथ नाकिस माशी इंतज़ाम और गैर मुल्की कर्ज़ों पर तवील इन्हिसार, जिसकी वजह से कर्ज़ों का गैर मुस्तहकम बोझ पैदा होता है, लातीनी अमेरिका की एक और खुसूसियत थी जो पाकिस्तानियों को भी मुतासिर कर सकती है। वक्त पर तेजी से आगे बढ़ी। सना 2013 में अमेरिका की मुकम्मल हिमायत से एक मकबूल और मुंतखब हुकूमत के खिलाफ एक और फौजी बगावत के नतीजे में इख्वान अल मुस्लिमून के सदर मोहम्मद मर्सी, जो मिस्र के पहले जमहूरी तौर पर मुंतखब सदर थे, को आर्मी चीफ जनरल अब्दुल फतह अस्सीसी ने माजूल कर दिया था। इख्वान अल मुस्लिमून के हजारों हामियों और दीगर जमहूरियत नवाज कारकुनों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया और बगैर किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। सीसी फौजी आमिरियत की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को मुबारक के बरसों के बाद बदतरीन करार दिया गया है। सबसे ज्यादा बदसलूकी अगस्त 2013 में हुई थी, जब फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मर्सी के हामियों के पुरअमन एहतजाज पर हमला किया था, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 1069 मुजाहिरीन हलाक हुए थे। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसे हालिया तारीख में एक ही दिन में मुजाहिरीन की सबसे बड़ी हलाकतों में से एक करार दिया है। इख्वान अल मुस्लिमून के सैकड़ों मुबैना हामियों को भी एक ही मुकदमे में सजाए मौत सुनाई गई। सना 2019 में मिस्टर मर्सी हिरासत में इंतकाल कर गए थे, जिसके बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन का ख्याल है कि यह रियासत की जानिब से मनमाने कत्ल के मुतरादिफ हो सकता है। गैर कानूनी बगावत और उसके बाद जनरल सीसी की आमिरियत की खिलाफ वर्जियों के बाद से इंसानी हुकूक के खुद साख्ता आलमी बेवहे की जानिब से गहरी खामोशी छाई हुई है। अप्रैल 2022 में हुकूमत की तब्दीली के बाद से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट खतरनाक हद तक सीसी के मिस्र और इससे कबल लातीनी अमेरिका और दीगर जगहों पर जमहूरियत मुखालिफ हुकूमतों की जानिब से की जाने वाली मुतअद्दिद जमहूरियत मुखालिफ हुकूमतों की जानिब से की जाने वाली सियासत कशीफ को अपनाने की तरफ झुकाव रखती है। अगरचे पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की एक तवील तारीख है, लेकिन ये आम तौर पर रियासत के खिलाफ मुसल्लह तसादुम के तनाजुर में हुए हैं। माजी में सहाफ़ियों को कत्ल किया गया, मारा पीटा गया और डराया धमकाया गया, जिनमें कुछ हाई प्रोफाइल सहाफ़ी भी शामिल हैं, लेकिन कीनिया में मुल्क के सबसे मुमताज़ तहक़ीक़ाती सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल एक नया और अफसोसनाक वाक़या है। दूसरों को मौत की धमकियां मिली हैं और उन्हें जलावतनी पर मजबूर किया गया है। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मुबैना जिनसी इस्तेहसाल समेत गैर इंसानी तशद्दुद के हथकंडों को अपनाना भी एक मनहूस नया बाब है। एक तरफ अगरचे लातीनी अमरीकी फौजी बगावतों और उसके बाद इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में अमरीकी मुलव्वस होने का एक वाज़ेह तज़वीराती जवाज़ था और साथ ही तिजारती मकासद जैसे इराक जंग के लिए थे, लेकिन मिस्र पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के मुहर्रिकात फौरी तौर पर कम वाज़ेह हो सकते हैं। मिस्र के मामले में क्लाइंट रियासत को अपने असर और रसूख के दायरे में रखना एक वाज़ेह उम्मीदवार है, जबकि इस्लामी असर और रसूख को दूर रखना, चाहे वो कितना ही जमहूरी और पुरअमन क्यों ना हो। 1992 में अलजायर में इस्लामी साल्वेशन फ्रंट (FIS) की फतह पर फ्रांस का रद्द अमल और उसकी साबिका कॉलोनी में एक और गंदी जंग भड़काने में इसका मुलव्वस होना उसकी एक और मिसाल है। पाकिस्तान के मामले में हुकूमत की तब्दीली को फ़रोग़ देने में अमरीकी मुहर्रिक दो गन्ना नजर आता है। बदनाम और टेढ़े पुराने मुहाफिजों को बहाल करना एक ऐसे सियासी निज़ाम के तसलसल को यकीनी बनाता है जिसमें फ़ौजी और बदउनवान मुल्की हुक्मरान अशराफिया अमरीकी मफादात को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करती है।
दूसरा मकसद सी पैक के आगाज के बाद चीन के असर और रसूख को रोकना और गवादर तक इसकी मुमकिना रसाई को मुनक़ते करना है। अफगानिस्तान की मादनी दौलत तक चीन की रसाई को महदूद करना भी एक तस्वीराती हदफ मालूम होता है। हुकूमत की तब्दीली, अगवा, गलत कैद, अजियत पहुंचाना, कत्ल की कोशिश की गई, जबरी गुमशुदगी, झूठे मुकदमात, जलावतनी, नाकदीन को खामोश करना, एक अमरीकी क्लाइंट रियासत के तौर पर दोबारा पोजीशनिंग। ऐसा लगता है कि हम तमाम डब्बों पर टुक लगा रहे हैं। अगरचे पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कोई नई बात नहीं है, लेकिन हुकूमत की तब्दीली के बाद के मंजरनामे में उनके पैमाने और बेशर्मी ने खतरनाक मोड़ ले लिया है। चाहे पाकिस्तान मिस्र की तरह चलने वाला हो या लातीनी अमेरिका की तरह ज़वाल पजीर हो, ये एक खतरनाक और मनहूस पेशरफ्त है जो आने वाले कई इंतहाई मुश्किल सालों का पेश खैमा साबित हो सकती है। मज़मून निगार साबिक वज़ीर आज़म के मातहत इक्तिसादी मशावरती काउंसिल के रुकन थे। अखज़ शदा बतारीख 29 जनवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.